My memory is not that strong because I was very small. But the fact is, I could read the book very well because my father had already taught me how to read Hindi. Though we are Sindhis, but my education started with Hindi. That is also I discovered a little later that my father and my family in Sindh, in the area, the village that I come from, Sindhi, that was Gambat. It was called Gambat. And our family also had a school which was run by our family. It was a school which taught संस्कृत. उस वक्त इसको बहुत अच्छा माना जाता था. And my family had a school, and they taught Sanskrit. लेकिन उससे ज़्यादा मुझे मालूम नहीं है, मुझे याद नहीं है कि उसके बाद immediately the partition took place. It was the time when the partition was taking place, so there was a lot of turmoil in our family too. I could not get the details of that, but I saw at that moment that the forms that were distributed among the students of the school that was run by us. But beyond that, I do not remember anything. But the fact I want to emphasize on that even from a very young age, I was introduced to reading, and the language that I read was Hindi. और फिर राजस्थान आने के बाद तो फिर ज्यादा ही हिंदी से, राजस्थान जब आप लोग चले आए वहां से, सिंध से और उदयपुर के आसपास के इलाकों में, तब तो ज्यादा हिंदी से और जुड़ाव बढ़ गया होगा आपका, हिंदी से, हिंदी किताबों से. Yeah. And I could read Hindi even before I went to school, because Hindi was taught to me by my father, and by him, there was no teacher. I was one-to-one with my father. I don't know how it happened, but it happened. But once I knew that once I started reading Hindi, and the first book that I read was Mahabharata. That time I can think of now was a very strange time because everything was new to me. But what I remember is, I could remember, I don't know. But I remember one thing, that in terms of drama, I got the full feeling after reading the book in Hindi in written form, and I felt it was very exciting. I found it very exciting. I don't know what the exact story was, but whatever I read and whatever I saw in that book, it was in, some illustrations. So I remember that what I was reading was very exciting. It was exciting, particularly something about some Ranbhumi and some, now what I recall as war.
about two armies fighting each other and things like that. Very little. I mean, you can't call it memories. It was very, 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 गोविंद जी I आपने was, I जो was too. जी That's all I remember. जी, That's जी, how जी। I started it. जी 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 गुरु जी मैं कह रहा था कि आपने जो बात कही कि उसके बाद तो फिर पार्टीशन हो गया और सब कुछ उथल पुथल हो गया और आप लोगों को कराची से चल के राजस्थान आ गए आप लोग और वहाँ रहने लगे आप लोग। ये जो उथल पुथल जो तो आपने देखी, ये जो महाभारत आपने पढ़ी बचपन में, और वो पढ़ने के साथ ही साथ एक महाभारत आपने देखी भी कि जो दो भाइयों के बीच में जो महाभारत में हो रहा था, एक कुनबे के बीच में जो महाभारत में हो रहा था, वही आपने देश में होते हुए देखा। जो भी हो बचपन में उखड़ने की कुछ ना कुछ तो यादें होंगी। और मेरे ख्याल से अगर मैं अतिशयोक्ति शायद नहीं बोल रहा हूँ कि गोविंद निहलानी का सारा सिनेमा एक तरफ और तमस एक तरफ कराची में, और तमस में शायद उन्हीं यादों को, जैसे तमस लिखने के बाद में भीषम साहनी जी ने कहा कि छोटे छोटे नोट्स जो मैंने तब बनाए थे और बाद में भी उनको रिवाइव किया रोते रोते, और फिर वही सब तमस में गया। तो तमस एक पुस्तक को लेकर के जितनी ईमानदारी से बनाई गई एक फिल्म है, और इतना बड़ा काम 6 घंटे की एक फिल्म जो आपने बनाई सारे विरोधों के बावजूद। और मेरे ख्याल से अगर आपने तमस देखी हो, पढ़ी हो, तो जितनी ईमानदारी से बनाई गई, अगर तमस का पहला पन्ना आप खोलें तो सुअर की चिचियाती हुई आवाज, एक आला उसके अंदर रखा, एक दिया, उसको एक सुअर को दौड़ाता हुआ एक आदमी, मारने की कोशिश करता हुआ आदमी, जिस तरह से लिखा है भीषम जी ने बिल्कुल उसी तरह से फिल्माया है अधिकतर चीजों को। नेचुरली उपन्यास को टेलीस्कोप करना पड़ता है, काटना पड़ता है, लेकिन इतनी ईमानदारी से किसी साहित्य को बहुत कम फिल्म मेकर्स ने बरता है जैसे आपने बरता है। तो अपने पार्टीशन से और तमस से क्या आपका जो संबंध रहा है एक साहित्यिक कृति को लेकर के, उसके बारे में कुछ आप हमें बताएं। Tamas was a book which I noticed at the top shelf of a book in Delhi. There was a bookshop. In Sri Ram Center. Yes. जी उसमें. So I saw it there, and I just felt good about the title. Just that. तो मैंने कहा यार दिखाओ जरा। तो मैंने पढ़ा, थोड़ा सा पढ़ा तो मुझे लगा कि this is about partition. I took the book. At that time, I was also shooting Gandhi. I was part of the shooting team. For a few days, I could not read it. But once I started reading it, I couldn't put it down. What I remember most about that book was it was written in such simple language, and somehow जो कुछ भी लिखा गया मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसा कि सचमुच ऐसा ही हुआ होगा। I did not have any questions. मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं कहानी पढ़ रहा हूँ। I just read it, and when I read it, and I said, this is the book. By that time, because I was in cinema and I was a cameraman at that time, shooting Gandhi, I said, this is the book that I would like to make it. And the first person I asked about this was the director of Gandhi. Richard Attenborough. Yes. So I told him, I have read a book, and which is very nice. इसमें English characters भी हैं,
or Hindi, Indian characters are also there, Muslim characters are also there. It's a very good book. He said, okay. I said, I would like you to consider this. He said, okay, when you're ready to show it to me, because it's a Hindi language, you tell me. If I'm ready, if I'm around, I will do it with you. So that gave me a little, encouragement. गोविंद जी, एक चीज मुझे और बड़ा एक इसमें खुश इत्तेफाक ये लग रहा है कि एज द हेड ऑफ द सेकेंड यूनिट the partition scenes and the riot scenes were being done by you. Yes. So उसी समय जब आप वो ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन के सारे सीन्स जब आप शूट कर रहे थे गांधी के लिए, उसी समय एक किताब आपके हाथ में लगती है, आने जाने वाली किताब, जहाँ की कि 1.5 करोड़ लोग यहाँ से जाएंगे और 1.5 करोड़ 75 लाख यहाँ से जाएंगे, 75 लाख वहाँ से आएंगे. Gandhi was very ambitiously managed. Yes. And it was not done by only one unit. Director was one, Richard Attenborough. But some parts were given away to others. And the part that I did was the second unit director and cameraman. I was the director and the cameraman. So when I started working on it, it was a very different experience because Richard Attenborough said, I went to him and I said, how would you like me to approach as a director? How do you want me to shoot? Do you have any idea? He said, no. You have read the script? I said, yes. He said, do it the best that you can do. क्या ट्रस्ट है, देखिए आप पहले चुन लो सही आदमी पे ट्रस्ट करो. Yeah. So this expression of confidentiality, he felt that I could take on the mantle of a director at that time, because I was the second unit director and the cameraman. He said, go ahead and do it. You don't have to come and ask me every time. So I kept quiet, thank you, and I just went on. Whatever I could think of, I went on doing because I had full support of Richard Attenborough. That makes a lot of difference when you are working in a unit and the director gives you so much confidence that you can go and do it. And I did it that way. They did not ask me any other things. The only thing I remember at that time, I got the kind of a call to say, go easy on the Rostock. I was apparently using अच्छा, गोविंद जी lot of was Rostock. known for taking many takes. Even in his own production films, he takes many takes. ऐसा नहीं था कि दूसरे का अंग्रेज का इसलिए उड़ाओ, जब खुद भी शूट करते हैं तब भी काफी शूट करते हैं. Beyond that, no other remark was there from there. They are very happy whatever the rushes they shot. Whatever I had shot, the rushes they were also shown to them. And they were happy and we just carried on. So that was a very important experience for me. गोविंद जी, जहाँ पुस्तकों को सिनेमा में लाने का सवाल है, आपने बहुत जल्दी ही, मतलब आक्रोश तो बिल्कुल विजय तेंदुलकर साहब की लिखी हुई कहानी थी. और मुझे याद है कि जब 1980 या 81 के फिल्म फेस्टिवल में दिल्ली में मैंने पहली बार देखी थी जब वो पिक्चर, तो ऐसा लगा था कि जैसे किसी ने मुंह पे कांच की बोतल फोड़ दी है, कोई आके बियर की बोतल फोड़ ही दे सर पे, तो इस तरह की फीलिंग हुई थी. तो वो तो ओरिजिनल स्क्रीन प्ले लिखा था आदरणीय विजय तेंदुलकर साहब ने, लेकिन उसके बाद से आपके चाहे अर्धसत्य हो वो भी
एसडी पनवलकर की कहानी सूर्या पे आधारित थी। हाँ। मराठी से आपने कई चीजें ली हैं अपने जीवन में। बंगाली का उपन्यास माँ सविता देवी जी का 1084 की माँ, आपने जिस तरह से लेकर के उसको फिल्म में उतारा, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा उदाहरण है। कुछ आप माँ श्वेता जी से अपने संबंधों के बारे में और उस उपन्यास के बारे में कुछ याद करेंगे, 1084 की माँ के बारे में। You see, जी, right from the beginning, as I told you, I developed fondness for strong drama. Yes. As I told you, with my original interaction with Mahabharata, which I thought was very drama. उसको पता नहीं था ये ड्रामा क्या क्या होता है कुछ, but there was something about it जो हो रहा था वो बहुत अच्छा लगता था. So I never approached anything कि ये अब सिनेमा है, इसको मुझे कन्वर्ट अपना, और ये किताब है, इसको मुझे कन्वर्ट करना है. I never thought it that way. I looked at books as a source of material. मैं ये नहीं सोचता था कि ये किताब है और मुझे उसको सिनेमा बनाना है, नहीं. ये किताब है, ये कहानी है, इसको मुझे बनाना है. I just thought of that way. I did not say मैं इसका सिनेमा क्रिएट करूँगा, कुछ नहीं. ये कहानी है, मुझे अच्छी लगती है, बनाते हैं. And that's how it happened. मैं थियरी में पढ़ाई नहीं. So whenever I got a book and I wanted to convert it into a film, I thought important thing is to read the book very, very carefully. Everything is there. All you have to see is कि मेरी नज़र में क्या आया. वो सब किताब में ही है, किताब में ही पढ़ी है. अगर उनको पढ़ने से things start hitting you, and that's the kind of interaction I went through, and I found it very, क्या कहते हैं कि जिसको पढ़ने के से मज़ा आता है, जिसमें हमको एक्साइटमेंट होता है. तो मुझे किताब को कन्वर्ट करना या न करना पड़ना वो सवाल नहीं हुआ. दिस इज द स्टोरी, आई हैव टू मेक इट, खत्म. सिनेमा है या क्या है, कुछ भी नहीं. तो आई डिड नॉट गो थ्रू दिस, ये स्टोरी है, इसको मुझे सिनेमा में कन्वर्ट करना है, मुझे ये करना होगा, वो करना होता, कुछ नहीं. जस्ट गो फॉर द असेंस. दैट्स हाउ आई थॉट. मतलब किताब को बाइबल समझ के काम किया. बिल्कुल, वाह, बिल्कुल. क्या बात. Even today, my attitude towards the book has not changed, and my attitude towards cinema has also not changed. क्या बात. So the point is, book is, उसमें बहुत गहराई होती है. आपके नज़र के ऊपर है, आपकी बुद्धि के ऊपर है, उसमें से आप क्या क्या ग्रहण करते हैं. दैट्स ऑल.